last time I've spoken about my journey, so I didn't want to go through that. But I did want to share that one moment जब जैसे वो कहते हैं ना हिंदी में बत्ती जलती है लाइट की, तो वो बत्ती जलने का मोमेंट जो है. So this was October of 2021. एक रात को कुछ काफी चीजों के बाद सडनली जैसे सर के ऊपर पानी चला जाता है, मेरे साथ कुछ ऐसे हुआ था. तो मैंने और मेरी बहन पढ़ना जो सर के फैशन वाली टीम के पास है, हमने बैग बोरिया सब पैक किया, एक कार बुक की और हम रात के 1 बजे निकल गए मखलियागंज के लिए. मखलियागंज मेन छोड़ के एक थोड़ा सा दूर जाके गए थे दलाई लामा टेम्पल, एक छोटा सा टिबेटियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल का एक छोटा सा रेस्ट हाउस है. हम हमेशा वहां पे रुकते हैं और हमेशा कहते हैं कि हम वो हमारा होम ऑफ द हार्ट, हमारा दिल वहीं पे रहता है, हम सिर्फ बॉडी यहाँ पे ले आते हैं दिल्ली में. तो हम करीब 12 घंटे नॉन स्टॉप ड्राइव करके वहां पहुंचे और वहां पे जाके मुझे लगा कि जैसे थोड़ी सी हीलिंग प्रोसेस होती है. This was after 3 months after my surgery, and I was still under chemotherapy. I had taken about 2 sessions of chemotherapy. So I had spoken about this the last time as well. But क्या होता है ना, and Ramesh sir may have had a different view. But what happens is mostly for us cancer patients, कैंसर एक बीमारी नहीं होती, वो एक ऐसी कंडीशन हो जाती है आपकी लाइफ की जो आपकी पूरे लाइफ को टेक ओवर कर देती है. कोई कोई पार्ट ऑफ योर लाइफ नहीं छोड़ती. स्पेशली इफ यू जस्ट आपने लाइफ शुरू की है एंड यू जस्ट फिगरिंग आउट क्या होगा आपकी लाइफ में. तो मेरे साथ भी कुछ उस वक्त वैसा ही हो रहा था. मैंने इसके बारे में पहली बार की, मेरा करियर उससे बहुत फास्ट प्रैक्टिस रहा और वो एकदम सडनली खत्म हो गया. मुझे मेरा एक बहुत बड़ा सोशल सर्कल होता था, वो भी खत्म हो गया. और जो वो कहते हैं ना द लास्ट स्ट्रॉ विद व्हिच ब्रेक्स द कैमल्स बैक, मेरे साथ उस रात को वो हुआ. सो एसेंशियली पहले तो सब हाँ हाँ विल बी देयर टू सपोर्ट यू, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, एंड देन स्लोली सब मूव आउट कर जाते. सारे नहीं बट 90% मूव कर जाते हैं आपकी लाइफ. तो हाँ, हम लोग बंगाली में एक दुर्गा पूजा के बाद एक गैदरिंग करते हैं विच इज कॉल्ड द विजया गैदरिंग. एंड मेरी बहन और मैं ट्रेडिशनली वो हमेशा होस्ट करते आए हैं. और उस साल भी डिस्पाइट द सर्जरी, डिस्पाइट द कीमोथेरेपी, मेरा पूरा फुल ऑन प्लान था वो होस्ट करने का. और मैंने 2 महीने पहले अपने फ्रेंड्स वगैरह सोशल सर्कल से चेक करके डेट वगैरह फिक्स किया था, जब सबने कहा था हाँ हाँ हम आएंगे. और जब एक्चुअली एक ही हफ्ते पहले था मैंने सबको रिमाइंडर मिला, तो सबने आउटराइटली मना कर दिया. किसी को कुछ था, किसी को कुछ था, किसी को कुछ था. एंड दिस वाज इन अ लॉन्ग लाइन ऑफ सच रिजेक्शंस. जब लोग मुझसे मिलना नहीं आ रहे थे, मुझे फोन पे कॉल नहीं करते, कुछ नहीं करते थे. एंड दिस इज अ होल लॉट ऑफ रिजेक्शंस व्हिच वर कमिंग. और मेरी ये काफी बड़ी बात थी बिकॉज I am somebody who invests a lot in my groups, or because I grew up away from my traditional larger family. For me, these friends were my family. I thought of them as somebody who were part of myself. So when we started behaving like this from that July time frame onwards, जब मेरा diagnosis हुआ to October when things started going really weird, this was like too much for me. और मुझे कहीं जाना था, थोड़ा सा अकेले में रहना था, obviously बुक पढ़ना, everything is okay as I have one. And I just needed to figure out my life. So once I reached mature college, मुझे थोड़ा सा वो जो एक डाउनवर्ड स्पाइरल जिसे कहते हैं वो थोड़ा सा लगा कि थोड़ा कंट्रोल नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आई कैन सी रैशनैलिटी कमिंग बैक टू मी. बट अभी भी काफी कुछ होना बाकी है.
तो आई वाज स्टिल वर्किंग बिकॉज आई वर्क वर्चुअली. मैं वहां पे जाके भी काम करती थी और 2 दिन बाद मैंने जब लॉग इन किया तो मुझे पता चला कि मेरे लीडर ने, जिसको मैं लीडर नहीं समझती थी, जिसको मैं अगेन एक बहुत क्लोज थी मैं उनकी, मैं आई आई लिटरली हम लोग ऐसे बात करते थे कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो आउटसाइड द वर्क है. वी आर मोर लाइक सोल सिस्टर्स एंड ऑल ऑफ दैट. मुझे पता चला कि एक पोजीशन आई थी जिसके लिए मैं एकदम रेडी थी. और मतलब मुझे पहले बताया गया था कि मेरे लिए ही वो पोजीशन है. और फिर वो पोजीशन किसी और को दे दिया गया और मुझे बताया नहीं. For somebody who is very invested in work और जिसका करियर प्लान बहुत अच्छा था, that along with the illness, along with the friends, all of that was creating a really bad place. मुझे लग रहा था कि जैसे मैं गिरती जा रही हूँ, गिरती जा रही हूँ, गिरती जा रही हूँ और इस मतलब डाउनवर्ड स्पाइरल का कोई एंड नहीं है. जो कुछ चीजें भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी, करियर, मेरा फ्रेंड्स, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो सारा एकदम हेडलॉन्ग गिर रहा है. जैसे किसी 108 मंजिल से कोई कोई चीज गिर गई है और कुछ रुक नहीं रहा था, कोई मुझे एंकर नहीं दिख रहा था और मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि कुछ सेम्बलेंस ऑफ सेंस बने जो इंटरनली जो मेरा रेज है. आई बीन डायग्नोज्ड एट अ वेरी यंग एज. वो ऑल ऑफ दैट कि वो कुछ रोक, लेकिन वो मिल नहीं रहा. नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग एक प्लान करके एक ड्राइव के लिए गए एंड काफी दूर तक हमें वो ड्राइवर लेके गया. एंड आफ्टर दैट वो रास्ता खत्म हो जाता है वही माउंटेन्स में और फिर आपको चलना पड़ता है. So this is like I said, this is just 3 months after the surgery. तो मुझे और पढ़ा को we weren't sure कि हम लोग मैं कितना चल पाऊंगी, at all चल पाऊंगी. But मुझे कुछ करना था. I was like अभी चलते हैं फिर देखेंगे जितनी भी दूर बात. Um, इनिशियली तो मुझे काफी इरिटेशन भी हो रही थी. वो पूरा बैकलॉग था लाइफ का, जो हुआ कल उसका वो था. फिर रास्ते में काफी हॉकर्स थे, काफी सेल्फी सीकर्स थे, चीख चीख के लोग बात कर रहे थे. सो वो जो हाइकिंग का जो जॉय है वो मिल ही नहीं रहा. मतलब इट वाज जस्ट वेरी कमर्शियल एंड वेरी क्राउड. बट फिर भी हम लोग चलते गए चलते गए चलते गए और एट सम पॉइंट वो सारे फोटो खिंचाने वाले लोग चले गए, चीखने चिल्लाने वाले लोग चले गए, जो रोड साइड हॉस्टल्स होते हैं वो भी कहीं छूट गए पीछे. एंड सडनली इट वाज वेरी क्वाइट. The only thing that the sound that we had was the sound of our falling feet on the ground and the rustling of the leaves जैसे कहते हैं वो जो जो पहाड़ों में ही मिलती है, स्पेशली हिमालयन पहाड़ों में. मतलब ऊंचे ऊंचे कॉनिफर्स, हवा में जो हवा के झोंके से जो नॉइज करते हैं, जो ट्री साउंड्स होते हैं, वो हो रही है. ट्रैक थोड़ा सा स्टीप भी होता गया और ग्राउंड काफी ब्रोकन भी होता गया, पर हम चलते रहे. बहुत शांति थी. धौलाधार रेंज जो है, it's one of the most beautiful ranges of Himalaya. And we could see those great gray slabs of stone, mountains merging into lovely green, verdure, and then becoming even more green, like almost black, almost kala. And on the top of those mountain point peaks, अभी भी last year के residual snow था, and the sun was at its height, and it was bouncing off those snow ice tips like glorious diamonds. And it was a it was that point of realization that there are powers at play which you don't control, which you don't understand, and there's something greater. And we kept hiking.
and finally we reached the summit, the peak, the end of that small mountain. And that was the time when I started coming back together. Standing there on that piece of that mountain and watching that entire landscape, you were in the presence of something way bigger than आपके ऑफिस में क्या हुआ, आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. And at that point, there is this beautiful poem by Mary Oliver, which एक समय मुझे एकदम पूरा याद होता था, बट कीमो ब्रेन तो अब याद नहीं है, तो मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगी. वो पोएम मेरे दिमाग में बहुत घूम रही थी, बिकॉज दैट वाज द एग्जैक्ट मोमेंट जब मुझे पता चला कि दिस इज what this poem meant, and this is what, poets like her were trying to teach lesser mortals like me. Every day, I see or hear something that more or less kills me with delight, that leaves me like a needle in the haystack of life. It, it was what I was born for, to look, to listen, to lose myself inside this soft world, to instruct myself over and over in joy and affirmation. Nor am I talking about the exceptional, the fearful, the dreadful, the very extravagant, but the ordinary, the common, the very drab. The daily presentation. Oh, good scholar, I say to myself, how can you help but grow wise with such teachings as these? The untrimmable lights of the world, the oceans shine, the prayers that are made out of the glass. It is that feeling of knowing um, that joy is in this moment, here and now, and the agency is always with you. It is not with anyone else, or nobody can give it to me. वो मुझे नहीं मिलने वाला बिकॉज किसी ने बोला है मुझे प्रमोशन मिलेगा, तो मुझे प्रमोशन मिल भी जाता है तो इससे मुझे वैलिडेशन, मेरी वैल्यू नहीं होती है. लोग आएंगे जाएंगे, but that in itself doesn't make for my value. What makes for my value, what makes for my peace, what makes for everything is the agency inside me. It is what we have inside us, which gives us that feeling of, of having a right, of being in control, of being in peace, and of being joyful. I know, of being joyful. So हम ट्रैक से वापस आ गए और फिर हमने बहुत बड़ा एक छोटे से रेस्टोरेंट में अंदर बहुत बड़ा मील खाया. फिर हम मैक्डोनल्ड्स के उस रेस्टोरेंट में वापस गए. And I learned that everything was inside of me. It was not for anyone else to. I'm sorry. Spam calls apparently have been phone. It was not where I was seeking in the outer world. Um, I needed to look at that. I needed to Can't look hear at you. this level. Now we can. Now we can. Yeah, it was that spam call. Sorry. So I am basically we needed to understand. I needed to understand that सब कुछ मेरे अंदर ही है, बाहर ये सब चोट है. I would come back and I would continue to work. I would make new friends. I would lose more promotions, but I would also get to work on great projects and have great colleagues. I would discover a calling in doing what I do now as part of the Candid Cancer Conversation, where I try to educate and provide support and provide immunity to cancer patients. Um, and most importantly, I learned that
all have inside us the power to control ourselves. And we don't need anything external to enable that. I would not be diagnosed with metastatic cancer after this as well. And I would be told कि मैं incurable हूँ, मैं कभी ठीक नहीं हो सकती. But because of what happened that day in October, back in 2021, I had a lot more strength to face this new chapter in my life with this incurable, tag. So that's pretty much all I have to say. So वो सर कहते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर. तो मुझे बताना कि वो बत्ती कब जली मुझे मोटिवेशनल स्पीकर या कुछ करने की. That's all I have to say. She is always inspiring. Last time also she inspired all of us. Today also again she has inspired us. Thank you, Jayanti. I'll ask Charu. Hi, Gigi. Hey, Charu, कैसे हो आप? I am good. How are you? I am good too. As good as it gets. And the thing is that, like you were talking about this, that it's like you don't need any validations from outside. But to come at that stage, it takes a lot of struggle. I do understand. But that like I heard this very beautiful line which said that, सबर करने से सबर आ जाने तक का सफर बहुत मुश्किल होता है. But That is बहुत सही बात है. But that is like so true that you explained that, at last, like nothing matters. It depends, like you know who you are. But the thing is that when we are kids, we know who we are. But जैसे हम grow होते जाते हैं, labels लगते जाते हैं, we start defining ourselves from those labels. And if we try to free ourselves from those labels, we hold the potential, like you said, to do something really good and identify ourselves. That is so good. And I also think that we might say that, कि मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ या फिर मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ हो गया. But we never realize that whatever is happening in our environment is happening to actually push us to fulfill our cause in this lifetime. I truly believe that. Thank you so much for sharing this. Thank you. Thank you for listening to me. Thank you, Oh, ma'am. we all love listening to you. Thank you. Malika. I think I most appreciate, so I just happened on her profile while I was looking for, content, and I was just checking all the influencers and different kinds of content that is available and the cancer communities that are there. Not much, to be very honest. Even Indian Cancer Society, it's pretty, I mean, it's deserted. No one talks, really. And then I happened on her profile and I was like, who is this angel? So she is so full of life and her content is so funny. The best thing that I like about her is, her ability to come up with memes and all. And that is what I am also trying to do. And, that's what we are trying to do, to make it as relatable as possible. So that, you take out the fear and you take away the sadness. Normalize the conversation. Just normalize it and just, get this message through that you are alive in this moment, enjoy it, and, be thankful for each and everything that you have. And I don't think that anyone else other than Jayanti ma'am, of course, like, all of us are here, but I think she's truly, like, made an example of, how to build a community. Her 10,000 plus community on Instagram, it's just fascinating. It's amazing, truly. Like, it's an inspiration for us because that's what we are trying to do as well. We've got a very small team right now. And as you can see, Suchishmita, you'll meet Suchishmita and Akanksha, and we've already met Mr. Ramesh and Prem. But Suchishmita and Akanksha, they're very young. They're very, very young girls again. And I was also very shocked when I came across their profiles. I was like, they're so young. And they're again, like, so positive, very, very positive, always eager.
to contribute, and I'm so thankful for you joining us and all of us together. It's a beautiful feeling, to be very honest. Thank you so much. Thank you so much for the kind words. And yeah, I love memes. And हर चीज का humorous side तो होना चाहिए ना. Correct. Ekdam. So those are my Friday funnies. Because sometimes I think of a content now and then I think, पता नहीं किसी को बुरा लग गया तो someone may think that, oh, is she trying to, are they trying to make fun of it? But it's actually, you have to be very This is fine balance. Yeah. हाँ, balanced होना पड़ेगा, and I'll just love your content. Thank you so much. That made my day. Thank you. So thank you so much, Jayanti. Thank you for sir. joining Thank you so and much. inspiring us.